Hello children, how are you all? Welcome in your English grammar class with your book Pebbles of Grammar class 8 by Magic Mind from Galaxy Publications. Let's start chapter number 14, Active and Passive Voice. सबसे पहले देखते हैं active voice. The verb in the active voice says that the subject does something. So active voice में जो verb है वो हमें बताती है कि सब्जेक्ट ने कुछ किया है या सब्जेक्ट कुछ करता है. स्टडी दीज एग्जाम्पल्स केयरफुली. द मैकेनिक रिपेयर्ड द कार. द चीफ गेस्ट गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच. इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट डज द एक्शन ऑफ द वर्ब. सो जो एक्शन है वो कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का. एग्जाम्पल है द टीचर एक्सप्लेन्ड द लेसन. माई ब्रदर पेंटेड दिस पिक्चर. द कैट चेज्ड द माउस. आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है टीचर, इज डूइंग द एक्शन एक्सप्लेन्ड. ओके, सब्जेक्ट ब्रदर परफॉर्म्स द एक्शन पेंटेड एंड सब्जेक्ट कैट इज एक्टिव इन डूइंग द एक्शन चेज्ड. अब आते हैं पैसिव वॉइस पर. इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. ओके, सो स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस प्लस बी फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. जैसे कि द लेसन वाज एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर. हियर फोकस इज ऑन लेसन. किस पर फोकस है? लेसन पर, जो कि है रिसीवर. सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, नॉट द टीचर. दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाय माई ब्रदर. फोकस है ऑन पिक्चर पर, द रिसीवर नॉट माई ब्रदर. द माउस वॉज चेज्ड बाय द कैट. हियर फोकस इज ऑन माउस, द रिसीवर नॉट द कैट. अब पर्टिकुलर यूजेस देखते हैं हम पैसिव वॉइस के कि क्यों हम एक्टिव से पैसिव में आते हैं. वी यूज पैसिव वॉइस इन स्पेशल सिचुएशंस. क्या सिचुएशन है? व्हेन द डूअर इज अननोन और अनइम्पॉर्टेंट. जब काम को करने वाला अननोन है या फिर अनइम्पॉर्टेंट है. एग्जाम्पल, समवन स्टोल माई बैग. दिस इज एक्टिव वॉइस. माई बैग वॉज स्टोलन, पैसिव वॉइस. वी डोंट नो हु स्टोल इट, सो द फोकस इज ऑन द एक्शन. मोर एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर. अ न्यू ब्रिज वॉज बिल्ट लास्ट ईयर. We don't know who built it, right? The lights were switched off at 10 p.m. So, doer is not important here. When the action is more important than the doer, जब काम ज़्यादा important है काम को करने वाले से, तब हम passive voice का use करते हैं. जैसे कि the police arrested the criminals. Active, the criminals were arrested. More example, the decision was announced yesterday. What matter is the announcement. वो announcement किसने की ये important नहीं है. The forest fire was finally controlled. So the doer is less important here. Now active to passive verb forms देखेंगे. Okay, so study the following table showing passive forms. Simple present में deliver. Okay, is RM delivered, right? Now they deliver letters daily. Letters are delivered, okay, daily. Simple past में delivered आएगा. Was, were delivered. She delivered the parcel yesterday. The parcel was delivered yesterday. Simple future में will deliver, will be delivered. Okay, so he will deliver the package soon. This is active voice. The package will be delivered soon. इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे. इज एम आर और डिलीवरिंग. ओके, यहाँ पर आएगा इज एम आर बीइंग डिलीवर्ड. शी इज डिलीवरिंग द डॉक्यूमेंट्स. द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग डिलीवर्ड. ओके, इस तरह से आपने इन सभी को पढ़ना है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और कंडीशनल. ओके, सो ये टेबल आप खुद से पढ़ेंगे. परफेक्ट कंडीशनल्स, मॉडल्स, इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल प्रेजेंट. सो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से एक्टिव फॉर्म बनानी है और किस तरह से
पैसिव फॉर्म्स। तो बच्चों अब कुछ बातें आपको याद रखनी है। सो व्हाट शुड यू रिमेंबर? इंट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सो दे कैन नॉट हैव अ पैसिव फॉर्म। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन ran to the park. Ran has no object, cannot be passive. The baby is sleeping peacefully. Is sleeping has no object, so cannot be passive. The dog barked loudly. Barked has no object, so cannot be passive. In passive voice, the object of the active sentence का जो object होता है becomes the subject, right? And the verb uses an appropriate form of be plus past participle. Example, the gardener waters the plant. This is active. The plants are watered by the gardener. This is passive. Passive voice cannot be formed for future continuous, will be doing, and perfect continuous, has or have been doing, had been doing. इनके लिए हम passive voices नहीं बनाते हैं. She will be painting the walls, active. अगर हम ये कहें the wall will be being painted, wrong as passive, नहीं कह सकते ऐसे. Some verbs take two objects, okay? An indirect object and a direct object. They are detransitive verbs, okay? So ये detransitive verbs होती हैं. The teacher gave the students homework, active. So indirect object है यहाँ पर the students and direct object है homework. Two passive forms are possible. Indirect object को अगर हम subject की तरह लिखेंगे, so the students were given homework, okay? और अगर direct object को हम subject की तरह लेंगे तो हमारा sentence बनेगा homework was given to the students. Other common verbs which can have two objects are ask, offer, pay, show, teach, tell. Example, she offered the guests tea. यहाँ पर indirect object को अगर हम subject की तरह लेंगे तो आएगा the guests were offered tea, और direct object को subject की तरह लेंगे तो आएगा tea was offered to the guests. Sometimes the doer is obvious or unimportant, so the by phrase can be omitted. जैसे कि the police caught the thief was caught. By the police भी लिख सकते हैं, लेकिन ये समझने की ही बात हो जाती है, हमने यहाँ पर हटा दिया क्योंकि doers जो है वो obvious है कि पुलिस ही पकड़ेगी. Someone stole my wallet, okay? Unimportant है कि किसने करा, ये important है जो हुआ. So the my wallet was stolen. So doer unknown है, by someone optional है. Active and passive, simple present. Here is a concise table explaining active and passive voice across tenses, models, imperative and infinitive. So यहाँ पर आपको कुछ examples दिए हुए हैं. चलिए मैं आपके लिए simple present का यहाँ पढ़ती हूँ. She writes a letter. A letter is written by her. Okay? They clean the classroom. The classroom is cleaned by them. Okay? He plays the guitar. The guitar is played by him. इसी तरह से if you know all the rules of tenses, then you will be able to convert active voice into passive voice. Simple past में he painted the wall. अब यहाँ पर हम was verb का use करेंगे plus past participle form of the verb. The wall was painted by him. Okay? They finished the work. The work was finished by them. She called her friend. Her friend was called by her. इसी तरह से simple future, present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, future perfect, models, imperative and infinitive. इन सभी के आपको यहाँ पर समझने के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. चिल्ड्रन, प्लीज रीड इट थॉरली एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. नाउ वी प्रैक्टिस. गिवन बिलो इज राहुल्स वीकली रूटीन. यहाँ पर ये राहुल का वीकली रूटीन है. राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हिज रूटीन यूजिंग द क्लूज. ये क्लूज कुछ दिए गए हैं, आपको एक पैराग्राफ में लिखना है उसके रूटीन को. यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड एक्टिव वॉइस. ओके,
सो यहीं पर मैंने इसे ठीक किया है, आप इसे पैराग्राफ में खुद से लिखेंगे. नाउ लेट्स रीड हिज रूटीन. Rahul wakes up at 6 a.m. every day. He rides bicycle to school Monday to Friday. On Saturdays, he plays football with his friends. On Monday and Thursday evening, he attends drawing classes. On Wednesday, his grandparents visit his house. Every night, he reads storybooks before sleeping. On Sundays, he helps his mother in the kitchen. So, इसी तरह से आपने इसे एक proper passage में लिखना है. Correct? We go to the next exercise. Choose the correct form, active or passive, to fill in each blank. So, this song is sung by millions of people every day. Columbus discovered America in 1492. The prizes will be given to the winners tomorrow. Someone broke the window last night. New roads are being constructed in our city these days. The homework has been done by the students. The letter was delivered by the postman in the morning. They won the match by cheating. Next exercise है, change these sentences into the passive voice. So the first sentence is the chef baked a delicious cake. So the passive voice sentence will be a delicious cake was baked by the chef. They will finish the project next week. The project will be finished by them next week. The gardener is watering the plants. The plants are being watered by the gardener. She has written an interesting story. An interesting story has been written by her. So इसी तरह से आप इन सभी को passive voice में change करेंगे. We come on the next exercise. Below you see a set of instruction for making chapatis. Okay, ये कुछ instructions हैं. Complete the following paragraph which describes how chapatis are made. The first one has been done as an example. So, salt is added to half a pound of coarse flour and an ounce of ghee is rubbed into the mixture. आगे चलते हैं. Salt is added to half a pound of coarse flour and an ounce of ghee is rubbed into the mixture. Cold water is used to form a soft dough. The mixture is covered and left to stand for an hour. The dough is kneaded and divided into balls. Then each ball is rolled to make a flat cake. A griddle is wiped with a greased cloth and then heated on a slow fire. Chapati is placed on the griddle and turned occasionally until it is slightly brown. So children, with this chapter ends here. I hope that this is clear to you. Thanks for watching. See you soon.